Hi all, good evening. This is the TSL once again, the Super League, and I am your commentator Shalin Gupta, welcoming all the viewers and the spectators who are watching this game live from the Fatima Cricket Ground and also on the YouTube channel of the Jfsc. And this is a wonderful match happening again in the TSL. Another match at the Fatima Cricket Ground under the lights, and Warrior Lions are locking horns with Mumbai Vikings today. And the news from the centre is that the Mumbai Vikings have won the toss and they've elected to bat first. And we've got the opening batsmen, Akash Ajmera and Maitrik Thakker. At the crease, Akash will be taking strike. Manish Shah, the left-arm pacer, will start the proceedings. And the first delivery about to get bowled. Here we go, Manish coming into bowl his first delivery. That's a wonderful shot. Played it well towards the square leg. Could be a couple of runs. And a second run taken easily by Akash, and he's off the mark with a good shot towards the square leg. 2 runs to start off the proceedings, and they've opened the account right on the first delivery. This is another match happening in the TSL. A good start by Akash Ajmera. Mumbai Vikings, they need to make some impact in this tournament. They will have to win this one. To do that, coming into bowl his next delivery, Manish. Oh, and this time he's appealing for an LBW. Is gone. What a delivery by Manish. Just have a look at that. Oh, and that was definitely hitting the leg stump. That's a very good decision by the umpire. And the first wicket down on just the second delivery. Akash Ajmera going back to the pavilion. We'll show you the wicket in the slow-mo this time. A delivery that came in sharply into the right hander. Just have a look at that. Oh, and that was very close. Probably would have definitely hit the leg stump. He was showing the bat. Was there a bat there? I'm not sure of that, but the umpire disagrees with the batsman. And the first wicket down on the score of just 2 runs. 2 for 1. Mumbai Vikings, a poor start. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. So Manish Shah striking on just the second delivery, and Nikhil is the new batsman, the left-handed batsman, will take strike. Manish Shah, the experienced campaigner, gets rid of the opening batsman. That's a good delivery again. Wonderful bowling first up. Nikhil playing it defensively, but the good thing is he's moving his feet forward, so good signs here for the batting team. Just the first over, they've lost their first wicket. Not at all a good start by any means. Manish Shah with his next delivery. That's a good delivery again. Another dot. Another good delivery, but he's played it well this time and he's missed that. Should be a boundary. Not at all a good effort by the fielder. Could have been a much better one. Just have a look at that. Oh, and that was sloppy. That's a boundary. The third man region. He starts off well, Nikhil. Opens his account nicely with a 4 towards the third man.
Coming into bowl the last delivery of the first over, Manish. Oh, and that's a good delivery again. He's played it well. Should just be a single this time. There's a third man out there, and that's the end of the first over. 7 for 1 after 1. That's a good start by Manish, and a good start by the Warrior Lions as well. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. So it's Jfsc sharing the new ball with Manish. On strike is Nikhil, and this is the first delivery of the second over. That's a full toss. He's played it well, but straight to the fielder at long mid off. A good attempt to get him run out, but a single taken nicely by Nikhil. That was the captain, Hitesh Bayani. And Matrick Thakkar is on strike for the first time. Oh, and that's a wonderful delivery. He was trying to push it towards the covers, but he was lucky he did not take the edge. In the air this time, and that will be a boundary. That's a good shot by Matrick. Starts off really well and gets off the mark in style. Just have a look at that. That was pitched up and he's played it well. Easy pickings. That's a boundary. And that's a good comeback by Jfsc. A dot delivery, played it really well. Matrick. In the air, played well in gap. Could be a single here. There's a fielder out there. Just a single. Nikhil. Oh, and that's a wonderful delivery.
That's a good end to the first over of a spell. Jfsc giving 6 runs. And the score after 2 overs is 13 for 1. That's a wonderful start by the Warrior Lions. They've taken an important wicket in the form of Akash Ajmera. And we take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Manisha coming to bowl his next over. Oh, and this is a wonderful delivery, but what a shot. That seemed to have been deliberate. He did play with a soft bat there. Just have a look at that soft touch. That was deliberate to an extent. That's a boundary. A wonderful start to this over. Maitrik Thakkar is on 9 now. Another delivery he's bowled well now. Good comeback by Manish. Wicket to wicket. Basic stuff, bowling really well. Another dot delivery. He's bowling really well. That was a good stop as well by the fielder. What a shot that is, just a single, but there's a fielder out there. It was a wonderful punch towards the sweeper cover. Maitrik is on 10 now. He's playing really well. Middling the ball almost every time. Nikhil on strike. That's a good delivery. He's driven it really well. That's a good stop as well. Just a single. Oh, they did not take the run. That's a dot delivery. That's a good shot. Should be a boundary. Will be a boundary. Drifting on leg side this time on his pads, and what a shot that is by Nikhil. Cashing on that very nicely. That's a boundary towards the fine leg. He's pulled it really well. Jfsc coming to bowl his next over. On strike is Maitrik. That's a wonderful shot again. And this will be a boundary. What a shot that is. Wow. That was in the gap and brilliantly hit. He's played it on the up. Just have a look at that. A wonderful piece of batting there by Maitrik. He's a genuine stroke player, this guy. Jfsc was a slightly foolish delivery and dispatched towards the covers boundary. It's a wonderful piece of batting by Maitrik. That's a good comeback after they lost the first wicket only on the second delivery of this innings. Maitrik has played well, 14 of 9, and Nikhil is also playing well, 10 of 8.
Another good delivery this time, played with a straight bat, and the sound of the bat is just so good to hear. That's what happens when you play with a straight bat. Another good delivery. That's a wonderful piece of bowling. 2 dots in a row. 3 in a row now. Beg your pardon, 2 in a row. Wonderful comeback. Jfsc coming in once again. Oh, and that's a peach of a delivery. He's just maintained that line brilliantly. Wonderful piece of bowling. Just have a look at that. I'll show you that delivery in the slow-mo. Oh, and very close to the edge again. So 3 dots in a row now. Another good delivery, and he's trying to take the quick single, but some really good fielding by Jfsc Tsl there. Point. No run taken again. So 4 deliveries. Dot on the trot. This is a really good comeback by Jfsc, who was hit for a boundary on the very first delivery of this over. This is the second over. He's bowled so well till now. Oh, that's a wonderful shot on the up. Oh, that's a good stop as well. Probably did hit his hand. We hope he's not injured by any means. But that's a wonderful comeback, and what an over. Only 4 of the over. 4 overs have been bowled. 26 for 1. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. And we got Hitesh Vagasia coming to bowl his first over. On strike is Nikhil again. 4 overs, 26 for 1. That's a good start by Warrior Lions after they were put into fielding first by the Mumbai Vikings. Mumbai Vikings have come back well after they lost a very early wicket just on the second delivery of the innings. Hitesh coming to bowl his first delivery. Oh, and what a delivery! Wow, a peach of a delivery to start the spell. Nikhil had no idea about that. That's a good start by Hitesh. Wearing a different jersey. The name of Piyush, but that is Hitesh for you. He's cleaned him up! Poor batting this is. Not the right shot to play. Playing across the line, and just have a look at that. Could have been a better shot for sure. Oh, and that was outside the off stump. How could you not play that straight? That's not a good shot, and a soft dismissal there, but what a start by Hitesh to his spell. Gets a wicket on his second delivery only. This is 26 for 2 now. The Warrior Lions have bowled really well till now, and Mumbai Vikings, they need to be a bit focused. They've lost 2 early wickets and the run rate exactly 6 runs and over. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
And we've got the new batsman who's the most prolific batsman of this entire batting lineup, Ashish Faujdar, at the crease. But he's been out of sorts as well in this tournament, hasn't been in tremendous form. And he's such a good batsman, can change the shape of any game and mold it to his team's advantage. But in this TSL, his bat has not done a lot, and that's a good start. A quick single taken, Ashish off the mark. Probably he's a lot more focused today, needs to stay at the wickets for long if their team wants to do well. The Mumbai Vikings, a wonderful team. Maitrik Thakkar on strike again. Jitesh Vagase has bowled really well. 3 deliveries for just a single and a wicket as well. Oh, and that's a good shot. Straight down the ground. Just a single. There's a fielder out there. Long on as well. That was a good shot by Maitrik. He's playing well. 15 of 15. Needs to stay for long at the wickets. And Ashish Faujdar is the key. If he stays for long and plays a big innings today, which is due for, we could have a wonderful match on our hands as spectators. Oh, and that's a wonderful shot. Pitched up. He's played well, but straight to the fielder. Could have been a boundary, but there was a fielder out there. Just a single. So Ashish playing some good shots at the start of his innings. Hitesh has bowled a wonderful over till now. Just one remaining in this over. 3 only have been given by Hitesh. 3 runs. On strike is Maitrik. Oh, and that's a good delivery. He's played it well. No run this time. That's the end of the over. So the 5th over has been bowled really well by Jitesh Vagasia. Just 3 of the over. 29 for 2 after 5. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. And we'll be back with the Hindi commentary. स्वागत करना चाहते हैं एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं का और इस TSL द सुपर लीग के एक बेहतरीन मैच में। और मैं शालीन गुप्ता एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ हिंदी कमेंट्री प्रस्तुत करने। 29 पर 2 है स्कोर 5 ओवरों के बाद। बहुत अच्छी शुरुआत नहीं कहेंगे। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया मुंबई वाइकिंग्स ने। जिमेश आ गए अपना तीसरा ओवर डालने। क्या गेंदबाजी है, और ये बच गए आशीष। और कैसे बच गए किसी को नहीं पता। जबरदस्त गेंद आप देख सकते हैं। कब निकली ये गेंद उनके बल्ले के पास, और ये बहुत ही भाग्यशाली यहां पर आशीष कि अभी भी क्रीज पर हैं। विकेटों के बहुत पास से ये गेंद गई, जैसा कि हमने रिप्ले में देखा। बहुत करीबी मामला था और अच्छी शुरुआत जिमेश की इस ओवर में। पिछले ओवर में भी 5 लगातार डॉट गेंदें कराई थी, एक चौका खाने के बाद पहली गेंद पर जो उन्हें पड़ा था। बेहतरीन गेंदबाजी और 3-4 कदमों का ही रनअप है इनका। बहुत ज्यादा लंबा रनअप नहीं है, लेकिन जिस तरह से तेज गेंदें डालते हैं, आसान नहीं इनको मारना।
अगली गेंद लेकर आते हुए जिमेश, अच्छा शॉट, बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथ में, एक भी रन नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी, फिर से चूक गए पूरी तरह से आशीष। 4 डॉट गेंदें, क्या शुरुआत है इस ओवर की जिमेश के द्वारा। पिछली 9 गेंदों को डॉट करा चुके हैं जिमेश। पिछले ओवर में 5 लगातार डॉट गेंदे और अब 4 गेंदें, एक भी रन नहीं दिया है 9 गेंदों पर। इससे बेहतरीन गेंदबाजी तो हो ही नहीं सकती T20 के किसी भी स्तर के और किसी भी प्रतियोगिता के मैच में। 9 डॉट गेंदें तो सोने से भी ज्यादा महंगी, तारीफ करनी पड़ेगी जिमित की यहां पर। बहुत ही मूल्यवान गेंदबाजी यहां पर। एक और डॉट गेंद, बेहतरीन। 5 गेंदें लगातार डॉट इस ओवर में भी। पिछले ओवर की भी 5 गेंदें डॉट थी, तो 10 लगातार डॉट गेंदें डाल चुके हैं। जिमेश के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी उतनी कम। बेहतरीन गेंदबाजी। एक और डॉट गेंद डालेंगे तो मेडन ओवर हो जाएगा ये, जो कि T20 क्रिकेट के संदर्भ में तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी होगी। और ये बल्ले का भारी किनारा और एक ही रन। जी हां, सिर्फ एक रन बना है इस ओवर में और 6 ओवर के बाद स्कोर 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आशीष फौजदार 6 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना पाए इस ओवर में। जिमेश का बेहतरीन ओवर। और एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। जितेश फगासी आए अपना अगला ओवर लेके। बेहतरीन शॉट, क्या ये चौका है? जी हां, 4। जी नहीं, क्षेत्र रक्षक तैनात है, 1 ही रन। अच्छा कट खेला था यहां पर आशीष फौजदार ने, लेकिन 1 ही रन। तो मैत्रिक ठक्कर थोड़ा सा धीमे हो गए हैं। 16 गेंदों पर 15 रन। अब आशीष फौजदार भी अच्छी खासी गेंदें खेल चुके हैं। नौ गेंदों पर सिर्फ 4 रन। बहुत ही उच्च स्तरीय गेंदबाज बल्लेबाज हैं आशीष, अच्छे गेंदबाज भी हैं, हरफनमौला खिलाड़ी हैं, लेकिन बल्लेबाजी के तो क्या ही कहने इनके। लेकिन फॉर्म जो है आजकल थोड़ा साथ नहीं दे रहा है।
बढ़िया शॉट, लेकिन एक ही रन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन लिया खेलकर। और आशीष के बल्ले से एक बड़ी पारी की सबको प्रतीक्षा है। जी हां, ये इंतजार सारे दर्शकों और जितने भी उनके साथी खिलाड़ी हैं उनको है। और यहां पर बाहरी किनारा, और यहां पर बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, 1 ही रन। जी हां, देखिए जब आपका समय पूरी तरह आपका साथ नहीं देता है तो आपके सीधे शॉट्स भी बाहरी किनारे की तरह लगते हैं। और इन शॉट्स के तो माहिर हैं आशीष, लेकिन कहीं ना कहीं शायद समय साथ नहीं दे रहा है। और यहां पर अपील कर रहे हैं स्टंपिंग की, लेकिन पैर क्रीज के अंदर ही अंपायर ने ऐसा निर्देश दिया। अच्छी गेंदबाजी जितेश के द्वारा, ऑफ स्टंप के बाहर रखी थी और हाथ खोलने का मौका तो था, लेकिन लेंथ बहुत जबरदस्त थी, लंबाई जबरदस्त थी, उसके चलते बल्ले पर सही से आई नहीं ये गेंद। अगली गेंद जितेश वगासिया की, बढ़िया गेंदबाजी और अंदरूनी किनारा, इस बार पैड्स पर 1 भी रन नहीं, 2 डॉट गेंदे फिर से। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी वॉरियर लायंस के द्वारा। और ये जबरदस्त शॉट, 4 रन। बाहरी किनारा लगा, लेकिन ये करारा प्रहार किया था। और ये थर्ड मैन की दिशा में 4। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रन है। 7 ओवर में 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन प्रति ओवर, 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेल रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर है उसके ऊपर रन रेट, लेकिन 7 रन आए इस ओवर में। और चौके से इस ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। संतोष पलवे आए हैं, नए गेंदबाज, अच्छे गेंदबाज हैं। और यहां पर आशीष फौजदार अब वापस स्ट्राइक पर। अब देखना है कि क्या संतोष पलवे की गेंदों पर कुछ रन बना पाते हैं आशीष, या संतोष इनका विकेट लेंगे। लेकिन यहां पर रन रेट तो अभी और बेहतर हो सकता है, पूरी गुंजाइश है इसकी। अच्छी गेंदबाजी, और ये आउट पहली गेंद पर। बहुत ही हल्का ये विकेट, और आशीष के स्तर के हिसाब से तो बहुत ही सॉफ्ट डिस्मिसल जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, तो बहुत बाहर की गेंद थी और चौका लगना चाहिए था इस पे। लेकिन जब समय नहीं आपका सही हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और इसमें तो बल्लेबाज की भी कोई गलती नहीं कह सकते आप। लेकिन संतोष पलवे ने आते ही बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिया है। देखिए कुछ स्लो मोशन में दिखाएंगे। करारा प्रहार करने का, छोटी गेंद थी ये, शायद वाइड भी हो जाती अगर बल्ले से नहीं लगती। लेकिन यहां पर जबरदस्त विकेट कीपिंग भी, बहुत अच्छा कैच लिया और बहुत ही आसानी से यहां पर आशीष का विकेट ले लिया संतोष ने। और तीसरा विकेट भी गिरता हुआ 37 के स्कोर पर। खराब बल्लेबाजी यहां पर। और 37 पर 3, 7.1 ओवर में। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
और नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर संतोष पलवे की अगली गेंद, फ्लाइटेड गेंद और बेहतरीन शुरुआत नए बल्लेबाज को एक अच्छी गेंद डालकर निखिल पगधारे आए हैं। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी और अच्छा शॉट भी खेला, पैरों को आगे बढ़ाया और ड्राइव किया, लेकिन वहां पर एक क्षेत्ररक्षक पहले से ही मौजूद। तो 3 डॉट गेंदे, इससे बेहतरीन शुरुआत हो नहीं सकती है। पहली गेंद पर ही विकेट लिया और ये बच गए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चकमा दिया, छका दिया था और बहुत ही समझदारी वाली सूझबूझ भरी गेंदबाजी है। ये देखिए, बेहतरीन गेंदबाजी और वापस लाइव आ गए हैं। बहुत बेहतर गेंदबाजी है। ऑफ स्पिन डाल रहे थे और अचानक से लेग स्पिन डालने लगे हैं। तारीफ करनी पड़ेगी इस खिलाड़ी की, पूरी तरह से छका दिया है। 5 गेंदें डाल चुके हैं और पांचों अभी तक डॉट गेंदे हैं। पहला ही ओवर है इनका और ये मिड इन ओवर से समाप्ति इस पहले ओवर की। वाह, 37 पर 3 8 ओवर के बाद। क्या बेहतरीन गेंदबाजी संतोष पलवे के द्वारा। और निखिल पगधरे पूरी तरह से बांध दिए गए इस ओवर में और 8 ओवर में स्कोर है 37 पर 3। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे, आपके साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जितेश वगासी आए अपना तीसरा ओवर डालने। बेहतरीन गेंदबाजी की इन्होंने भी। मैत्रिक ठक्कर अभी भी डटे हुए हैं 20 रन पर। स्ट्राइक पर बढ़िया शॉट और ये खराब क्षेत्ररक्षण। 4 रन मिलने चाहिए यहां पर। जी हां, हाथ के नीचे से जाने दिया। लचर क्षेत्ररक्षण। ये देखिए, छोटी गेंद थी हालांकि, लेकिन ये तो रोक सकते थे। बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण। 4 रन का यहां पर इजाफा हुआ स्कोर में। गेंदबाज का भी यहां पर आत्मविश्वास थोड़ा सा टूटता है, मनोबल गिरता है अगर आप इस तरह का क्षेत्ररक्षण करें। सबसे महत्वपूर्ण हो गया है क्षेत्ररक्षण आजकल क्रिकेट में। बढ़िया वापसी। जी हाँ, ये बहुत ही हल्के रनअप से आते हैं। आप देखिए इनका तरीका गेंद डालने का, और विकेटों के बीच में ही डालते हैं, ये इनकी खासियत है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं। बड़ा शॉट मारने का प्रयास और ये आउट। आसान सा कैच और बेहतरीन गेंदबाजी। मैत्रिक ठक्कर ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ खास मिला नहीं उन्हें सिवाय लॉन्ग ऑफ पर क्षेत्ररक्षक के। और बहुत ही अच्छा कैच लिया जिमेश ने यहां पर, और चौथा विकेट भी गिरता हुआ। बहुत बेहतरीन ये गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण इस बार। 41 पर 4 हो गया स्कोर। मुंबई वाइकिंग्स खासी मुश्किल में। ये 9वां ओवर चल रहा है और जितेश का दूसरा विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी इनके द्वारा। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे, आपके साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आशीष खेडेकर आए नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर। जितेश की अगली गेंद
बढ़िया गेंदबाजी, डॉट गेंद से शुरुआत। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, और कप्तान की भी तारीफ करनी होगी, अभी तक यश थर्डेश्वर को नहीं लाए हैं, जो कि शायद सबसे ज़बरदस्त गेंदबाज हैं इस दल में। उनसे अभी तक एक भी ओवर नहीं करवाया है। तेज बयानी, ज़बरदस्त कप्तानी इनकी। और एक बार और बेहतरीन गेंदबाजी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास अच्छा था, लेकिन बल्ले पर गेंद आई नहीं, और अंत में तो ये डॉट गेंद ही हुई। इस ओवर की आखिरी गेंद। और बेहतरीन, हर गेंद बहुत ही जबरदस्त, और बहुत ही जबरदस्त ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के बाद स्कोर 41 रन, सिर्फ 4 रन बने इस ओवर में। 4 विकेट गिर चुके हैं मुंबई वाइकिंग्स के। और एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे, आपके साथ बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। संतोष पलवे का अगला ओवर, और ये बड़ा शॉट, बेहतरीन, और ये 6 रन। वाह, क्या खींचा इसे ऑफ स्टंप के बाहर से। ये देखिए, बहुत बेहतरीन गेंद, ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप पर थी गेंद। क्या प्रहार किया है, बड़ा छक्का ये। जी हां, ऐसे शॉट्स लगाना आसान है, और संतोष पलवे की पहली गेंद पर निखिल पगधरे ने जबरदस्त छक्का लगाया। अगली गेंद संतोष की, बढ़िया शॉट सीधे बल्ले से, हालांकि एक भी रन नहीं। और ये अच्छी गेंदबाजी, इस बार ज्यादा फ्लाइट दी, ज्यादा हवा में गेंद को रखा। एक बार फिर से अच्छी वापसी, छक्का खाने के बाद 3 डॉट गेंदें, जबरदस्त वापसी यहां पर संतोष पलवे की। शॉर्ट गेंद, और उसे आसानी से खिलाई 1 रन के लिए। अच्छा शॉट मिड विकेट की दिशा में, लेकिन पिछली 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन। स्कोर हो गया 48 रन, 10वां ओवर चल रहा है। खासी मुश्किल में यहाँ पर मुंबई वाइकिंग्स के बल्लेबाज, किसी को तो साझेदारी निभानी पड़ेगी अपने साथी के साथ। आशीष खेडेकर वापस स्ट्राइक पर, अभी तक एक भी रन नहीं बनाया 3 गेंदें खेलकर। संतोष की अगली गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, और ये ओवर की समाप्ति। 10 ओवर के बाद स्कोर 48 पर 4। अब ड्रिंक्स ब्रेक के निर्देश अंपायरों के। एक विराम के बाद वापस जुड़ेंगे आप सभी के साथ, और अब अंग्रेजी कमेंट्री लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
We're back live. Jfsc bowling his last over. He's bowled a wonderful spell and has taken 2 wickets as well. Oh, and this should be a single. That was bat, probably the inner edge. On strike is Khedekar once again. In the air, and that will be a couple of runs for sure. And that's a good stop. Good effort. Is that just a single? We'll have to just have a look at whether they took. No, they took just a single. So Ashish Khedekar on strike now. Is off the mark now. On strike is now Nikhil Pagdare once again. Oh, and that's a good shot on the back foot. He punches it nicely towards the sweeper for a single. That's a good stop by the fielder at sweeper cover. Just a single. This is really good bowling by Hitesh. This is his 4th over. Hasn't given away a lot of runs and has bowled such a wonderful spell with 2 wickets under his belt as well. Oh, and this time he's clubbed it. What a stop, but still it goes towards the boundary. That was a good effort by the fielder at deep mid wicket, but that was a wonderful shot. Oh, and that was a very good effort, but couldn't prevent the boundary. So Ashish Khedekar finally gets into the act, takes his first boundary. This is the 11th over, last delivery. That's a good comeback. A dot delivery to end the over. So 55 for 4 after 11 overs. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned. That's a good start and a quick run taken. Chance of a run out, but he misses that. Very good run taken by Nikhil Pagdare and Ashish Khedekar. And Ashish back on strike. Santosh Palve bowling his next over. This is his 3rd over. Oh, and he's mixing it up really well. Sometimes he bowls the leg spinner, sometimes the off spinner, sometimes the quicker one. This was the quicker one this time. And the leg spinner now. He's become Sunil Narayan for them. Mixing it up very nicely and getting a lot of dot deliveries because of the variations that he's got in his repertoire. Coming to bowl his next delivery. Oh, and that's a very good one. He played it well, but straight to the fielder. Oh, another good delivery. He's missed that completely. So this is really high quality bowling. He's trying to induce him for the big shot and just mixing it up so well that batsman is always confused. Oh, another good delivery, and that's a wonderful over, just one of the over. 56 for 4 after 12. The run rate still less than 5 runs an over. Not a good sign at all for Mumbai Vikings. They need to score at least a decent total for their bowlers to defend. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
You got Sufyan Parmer coming to bowl his first over, introduced into the attack. The leg spinner, that's a good start by him. Good shot by the batsman, just a single. Santosh Palve does well at covers. Wonderful piece of bowling, another dot. A lot of dots being played by the Vikings today. Oh, and that's a good delivery again, and a quick single taken. Coming into bowl his next delivery, Sufyan. He's bowled such a wonderful over till now. Oh, and this time trying to pull him. And gets a single. The square leg does well. Another good delivery, a quicker one this time by Sufyan. No run taken. Just 3 of this over, 13th over running. Not many runs do they have on the board. This time he's pulled that well. Should just be a single. There's a fielder out there. And that's the end of the 13th over. 60 for 4, just 4 of the over. What a start by... Oh, it was Pranay Jain, I beg your pardon. Not Sufyan. The scorer rectifies the mistake. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Jfsc being introduced into the attack. That's a big one, it seems. Wonderful hit. Huge 6, wow. What a shot that is, and this is what they need. It was such a wonderful shot by Ashish Khedekar. He's picked it up brilliantly. Starting off with a big 6. Wow. Let's have a look at that. How wonderfully he hit that. That was a big one. Huge 6. We're back live. This time pulled again. Another 6. 2 in a row.
This is great batting by Ashish Khedekar. What a shot that is, a short delivery and big six by the batsman. Ashish is on fire and all of a sudden the run rate. So the last delivery was a boundary and this is also a boundary. But that's a wonderful over till now. Just have a look at that once again. A wonderful shot, almost a six. But eventually it was a boundary. Just have a look at this for a replay. Absolutely clear with that replay. It's a boundary. But they've got another boundary in the previous delivery. So 14 of the over already. Oh, and this time another boundary it seems. That's a huge six. Wow. So 20 of the over already. He's playing a gem of a knock here, Ashish Khedekar. And Jfsc Tsl starts off in a nightmarish way in his spell. Just 4 deliveries he's bowled. Oh, and that was a big six. Oh, and that's a good delivery now, but no run taken, but the damage has already been done. Stunning batting this by Ashish Khedekar. Just have a look at that. What a shot that was. Brilliant pickup by him. Huge six. Pulling that again wonderfully well, and a very expensive over. 21 of the over. 81 for 4 after 14. What a comeback by the Mumbai Vikings and Ashish Khedekar. Ashish all of a sudden 27 of just 21. A very expensive first over by Jfsc Tsl. Couldn't have been a poor start to a spell. This is the end of the 14th over. Last 6 remaining. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. This is the 15th over and Pranay Jain coming to bowl is next. And he's got him. A good catch taken by the fielder at long off. A simple one. Just have a look at that. And Ashish Khedekar, a good innings comes to an end. Good. Oh, and that's a wonderful catch, to be honest. Such a lovely catch taken by him. And he's not happy, but he's played a wonderful hand. He'll have to go back
to the pavilion. And 81 for 5. Pranay gets his first wicket. On the first delivery of his second over. This is the 15th over. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Himanshu Rakka is the new batsman. On strike is Himanshu for the first time in this innings. That's his first delivery. He's played it well. Oh, and the fielder messes it up. Gives a second. They should have been just a one. He's off the mark nicely with a couple. Himanshu. This is the 15th over. Oh, and that's a wonderful piece of bowling. It's a very good piece of bowling by Pranay. .83 for 5. In the air. And in the gap as well. Should be a couple easily. This is really good batting by Himanshu. Oh, and he's played this really well. Brilliant batting this by Himanshu. 2 runs taken again, easily. That's a good shot again. This time another couple he would take. This is really good batting by Himanshu. And he's just been into runs right from the word go. He's played only few deliveries, but he's already on 8 of just 5 deliveries. And that's the end of the 15th over. 89 for 5. They're almost at 6 runs over now. We'll take a quick break and be back soon. And we'll be back with the Hindi commentary for the rest of the innings. Stay tuned, viewers. That's a good start by Yash. Allow us to switch to the Hindi commentary now for the rest of the innings. आखिरी 5 ओवर बचे हैं. एक गेंद हो चुकी है 16वें ओवर की. यश थड़ेश्वर आए हैं अपना दूसरा ओवर लेके. पहला ओवर बहुत महंगा था. आशीष खेडेकर ने ज़बरदस्त पिटाई की थी उनकी गेंदबाजी की, लेकिन अच्छी वापसी. आशीष भी जा चुके हैं वापस पेवेलियन में, तो खतरा भी टल चुका है. हालांकि यश भी बहुत ज़बरदस्त गेंदबाज हैं, हम सभी ये जानते हैं, लेकिन पिछले ओवर में अरे बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और ये कैच छोड़ा. आसान नहीं होते हैं जब इतनी देर तक हवा में रहती है गेंद. ये कैचेस, इस तरह के कैच ले लेते हैं आप तो बहुत ही ज़बरदस्त क्षेत्र रक्षकों में आपकी गिनती शुरू हो जाती है.
आसान तो नहीं था ये कैच, लेकिन लेना भी चाहिए था। 2 रन हो गए। निखिल पगदरे अभी भी डटे हुए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में। सिर्फ 2 रन दिए हैं अभी तक 4 गेंदों पर। बहुत अच्छी वापसी यश की। बड़ा शॉट, 6 रन, बेहतरीन। क्या जबरदस्त प्रहार है निखिल के द्वारा। ये देखिए आगे बढ़े डाउन द ट्रैक। बेहतरीन शॉट, 6 रन। बहुत अच्छा शॉट, तारीफ करनी होगी इस आक्रामक बल्लेबाजी की। और यश थडेश्वर एक बार फिर से, और ये जबरदस्त स्टंपिंग, लेकिन पहले से ही अंदर थे। ओवर की समाप्ति यहां पर। 8 रन बने इस ओवर में, और 16 ओवर के बाद स्कोर 197 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट खेला, आपको फिर से दिखाएंगे। आगे बढ़े निखिल और लॉन्ग ऑफ की दिशा में बेहतरीन शॉट। प्रयास अच्छा था, लेकिन आसानी से क्षेत्र रक्षक को पार कर गई ये गेंद। आखिरी 4 ओवर बचे हैं और प्रणय आए अपना अगला ओवर लेकर। इनका तीसरा ओवर। बढ़िया गेंदबाजी, 1 ही रन लॉन्ग ऑफ की दिशा में। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और ये 6 रन। तारीफ करनी होगी यहां पर। एक और जबरदस्त प्रहार, ये देखिए, और ये 6 रन। गेंद गई सीमा रेखा के पार। अच्छा शॉट, कट किया इसे स्वीपर क्षेत्र में। 1 ही रन यहां पर। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अब, और 100 रन भी पूरे हुए इस छक्के के साथ। बेहतरीन शॉट था। 105 पर 5 हो गया स्कोर। और पिछले कुछ ओवरों में जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है। सिर्फ 21 गेंदें बची हैं इस पहली पारी में, तो कोशिश कर रहे हैं जितने भी रन बना सकें। और यहां पर ये आउट हो गए हैं। जी हां, बहुत ही सरल यहां पर निर्णय था ये अंपायर के लिए। विकेटों के सामने पग बांधा, ये देखिए, एलबीडब्ल्यू। जी हां, कोई मुश्किल ही नहीं। अच्छी गेंदबाजी, और छठा विकेट गिरता हुआ प्रणय का ये दूसरा विकेट। हिमांशु पेविलियन वापस जाते हुए। 105 पर 6 हो गया स्कोर। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे। आपके साथ बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। जुगल शोभानी आए नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर। प्रणय आए डालेंगे उनको। इस ओवर की 5वीं गेंद।
प्रणय का तीसरा ओवर है, 2 विकेट ले चुके हैं। जुगल बेहतरीन खिलाड़ी, जबरदस्त बल्लेबाज, लेकिन अच्छी खासी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। बेहतरीन शॉट से शुरुआत, 4 रन पहली गेंद पर, वाह। जी हां, इसी का हम जिक्र कर रहे थे कि ये बेहतरीन बल्लेबाज हैं और आते इन्होंने ये साबित भी किया कि क्यों ये बेहतरीन बल्लेबाज हैं। बहुत ही सधा हुआ शॉट, सीधे खेला, बिल्कुल कमान से तीर निकलता है इस तरह का शॉट। 4 रन के लिए सीमा रेखा को पार करता हुआ चला गया और ये अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया वापसी और ओवर की समाप्ति यहां पर। लेकिन प्रणय के इस ओवर में 12 रन बने, 109 पर 6 स्कोर 17 ओवर के बाद, और रन रेट बहुत देर बाद 6 रन प्रति ओवर के अच्छा खासा ऊपर गया है, लगभग 6.5 रन प्रति ओवर। यश थड़ेश्वर आ रहे हैं अपना तीसरा ओवर लेकर और स्ट्राइक पर निखिल पगदर है। आखिरी 3 ओवर बचे और 140 का आंकड़ा तो पार करना चाहेंगे मुंबई वाइकिंग्स, खास करके जुगल और निखिल जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज डटे हुए हैं क्रीज पर। बढ़िया गेंदबाजी और उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण भी अपनी गेंदबाजी पर यश का। बड़ा शॉट, लेकिन एक ही रन होगा, क्षेत्र रक्षक मौजूद है वहां पर। जुगल सोबानी वापस स्ट्राइक पर, पहली बार खेलेंगे यश को इस मैच में। हालांकि यश के गेंदों की आज बड़ा शॉट यहां पर और ये कैच आउट, आसान से कैच दे बैठा बल्लेबाज। यहां पर क्षेत्र रक्षक को लॉन्ग ऑन की दिशा में बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश की जुगल ने, अच्छा प्रयास था इनका, लेकिन बहुत ही आसान कैच और आसानी से ले भी लिया जिमेश ने। यश को आखिरकार एक सफलता यहां पर प्राप्त होती हुई, इनका पहला विकेट। और जुगल ने पहला शॉट तो अच्छा खेला था लेकिन ज़्यादा योगदान दे नहीं पाए और 110 पर 7 हो गया स्कोर 18वें ओवर में। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। बेहतरीन गेंदबाजी और अच्छा रन लिया यहां पर। और ये आउट, बहुत ही आसानी से विकेट दे दिया यहां पर अपना। देखिए किस तरह से ये आगे बढ़ रहे थे बड़ा शॉट लगाने के लिए यश ने, लेकिन पूरी तरह से यहां पर चकमा दिया। निखिल भी वापस जाते हुए और बहुत जल्दी में लग रहे हैं बल्लेबाज। अभी भी 13 गेंदें बची हैं लेकिन 111 पर 8 हो गया स्कोर। क्या ये पूरे 20 ओवर खेल पाएंगे, अब ये देखना है। अच्छा खासा स्कोर हो गया था, अच्छी वापसी हो गई थी, लेकिन खराब शॉटों के चलते यहां पर एक 111 पर 8 और अभिषेक आ रहे हैं अगले बल्लेबाज।
क्या ये कैच था? एक रन तो मिल गया, लेकिन देखते हैं क्या ये कैच था। जी नहीं, बढ़िया शॉट था। एक रन मिला और ओवर की समाप्ति यहां पर 18 ओवर के बाद 112 पर 8। और यश ने इस ओवर में 2 विकेट ले लिए। इनका तीसरा ओवर था ये। आखिरी 12 गेंदें बची। अब देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। पहला लक्ष्य तो होगा पूरे 20 ओवर खेलना यहां पर। संतोष पलवे आए हैं अपना अगला ओवर लेकर। वाइड से शुरुआत यहां पर। ऑफ स्टंप की बहुत बाहर ये गेंद। अंपायर ने दोनों हाथ फैला दिए वाइड के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी वापसी। इन्हें मारना आसान नहीं है। जी हाँ, बहुत ही मिश्रण रखते हैं अपनी गेंदबाजी में और बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। दादा के नाम से प्रसिद्ध हैं अपने दल में। और ये बेहतरीन शॉट, 6 रन, क्या उठाया है, वाह। जी हां, अभिषेक सिंह जबरदस्त खिलाड़ी, सक्षम है बड़े शॉट्स खेलने के लिए। और क्या जबरदस्त शॉट, ये तो शायद आज का सबसे बेहतरीन शॉट है। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बड़ा छक्का, वो भी संतोष पलवे को। जी हां, भांप लिया था इस बार, हाथों को देखा गेंदबाज के और सबसे अच्छा तरीका वही होता है। हालांकि ये गेंद खेलने से चूक गए और 1 रन मिल गया। बाय का इशारा होना चाहिए यहां पर अंपायर का, जिन्हें लेग बाय का इशारा। तारीफ करनी होगी अभिषेक की, क्या शॉट था। एक बार फिर से आपको रिप्ले दिखाएंगे। जबरदस्त अंदाज में उसे पिक किया, ये देखिए, बेहतरीन फ्लाइट को पिक किया इन्होंने। वापस लाइव आ गए हैं। जी हाँ, एक बार फिर से वही गलती। आप इंतजार नहीं कर सकते इनकी गेंद को कि वो पिच करेगी, अचानक से तेज हो जाती है गेंद, ये खासियत है इनकी। आपको शॉट खेलना होगा, विद द फ्लो खेलना होगा। और ये बेहतरीन गेंदबाजी, एक बार फिर से बच गए। और इस ओवर की आखिरी गेंद, 19वां ओवर है, लेकिन 8 रन आए हैं अभी तक। ये फिर से वही गलती इन्होंने की और 1 रन लिया। आसानी से खेला, लेकिन ये शॉट ये पहले खेल लेते अगर तो शायद ज्यादा रन मिल सकते थे। आप इंतजार नहीं कर सकते संतोष की गेंदों को कि वो टप्पा खाने के बाद किस तरफ जाएंगी। और ये ओवर की समाप्ति 19 ओवर के बाद 121 पर 8। आखिरी 6 गेंदें बची हैं और यश थड़ेश्वर का 1 ओवर बचा हुआ है। और यहां पर एक और विकेट गिरता हुआ। नवा विकेट गिरता हुआ, आपको रिप्ले दिखाएंगे। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, लेकिन पूरी तरीके से चूके। और विकेट कीपर देखिए कितनी आसानी से उन्होंने गिल्लियां उड़ा दी। और यहां पर पूरे 20 ओवर ना खेलने का खतरा मंडराता हुआ। एक बार फिर से 9 विकेट गिर चुके हैं, 5 गेंदें अभी बची हैं। रविराज शेट्टी आए हैं स्ट्राइक पर। और ये अच्छे खिलाड़ी हैं, इनको आज 11वें नंबर पर भेजा है। शायद कुछ तो कारण होगा। बल्लेबाज तो बहुत ही अच्छे हैं ये,
और जबरदस्त गेंदबाज भी हैं। यश की अगली गेंद, बढ़िया शॉट, कैच छोड़ दिया यहां पर, आसान सा कैच था, एक ही रन मिलेगा। ये देखिए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन ये कैच होना चाहिए था, तो हाथ का कैच था, छोड़ दिया, और वो भी कप्तान ने छोड़ा, हितेश बयानी, लचर क्षेत्र रक्षण। बढ़िया शॉट अभिषेक का, 2 रन मिलेंगे यहां पर, और ये 4 रन मिल गए हैं, जबरदस्त, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक। जी हाँ, इनके पास शॉट्स अच्छे खासे रहते हैं, इनको इतना देर से क्यों बेचते हैं मुझे आज तक इस समझ में नहीं आया। बहुत ही सक्षम बल्लेबाज हैं, बड़ी पारी भी खेल सकते हैं। 11 रन देखिए बना दिए आते ही 5 गेंदों पर। उनकी खासियत यह है कि अनुभवी हैं, ये गेंदबाज के हाथ को अंत तक देखते हैं। हालांकि इस बार ये चूक गए पूरी तरीके से, लेकिन सीधे बल्ले से खेलना होगा इन्हें। 2 गेंदें बची हैं सिर्फ। अच्छा शॉट, एक ही रन, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। आखिरी गेंद बची है अब इस पहली पारी की। बेहतरीन शॉट, और ये 4 रन, और यहां पर समाप्ति हो गई है पहली पारी की। बढ़िया शॉट से समाप्त किया, आगे बढ़कर डाउन द ट्रैक और स्वीप कर दिया। फिर डीप स्क्वायर की दिशा में 4 रन, और अंतिम स्कोर 131 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 132 का लक्ष्य दिया है। यश थड़ेश्वर के 4 ओवर समाप्त हुए, लेकिन काफ़ी महंगे गया जो, इस ओवर में भी 10 रन बने उनके, और 132 का लक्ष्य दिया है। और करीब 10 मिनट बाद आपके साथ वापस जुड़ेंगे हम दूसरी पारी के लिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।
We're back live here and Ashish starting off the first over to defend 131 that has been made by the Mumbai Vikings. The Warrior Lions are now starting their campaign to chase 132 in this innings, and we welcome all the viewers and spectators once again. This is your commentator Shalin Gupta. TSL, such a wonderful tournament. He started off well. That's a good shot, just a single. There's a fielder out there at third man. That's a wonderful piece of bowling. Ashish has started off really well. Just have a look at that. Oh, this time in the air. Could be a big shot. And he's coming back for the second. This is really good piece of running. So 2 runs taken. Manish Doshi and Hitesh Mehta are the opening pair. That was a good shot by Manish. He's off the mark now. That's a great shot in the air, but just a single. There's a sweeper out there. This time a wide down the leg side. Ashish missing the line. And that's a good delivery. He's played it well, and a quick single taken. That's a really good piece of running by both these players. That's the end of the first over. The score is 6 without loss. That's a good start by the Warrior Lions. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Vinod Meher coming to bowl his first over. On strike is Hitesh Mehta.
That's a wonderful shot, cracked. But straight to the fielder. Wonderful stop by Jugal there. That shot covers. That's a wonderful shot. In the gap as well. What a shot that is. Will be a boundary. Brilliantly played. That's some class on display here. Just have a look at that. Punched hard towards the extra cover region, going towards the boundary in a flash. Wonderfully played. Hitesh Mehta. This is his first boundary. Oh, and this time, straight to the fielder. He was trying to play the big shot, but straight to square leg. Oh, in the air. That's a good shot. And that's a boundary. He's playing such wonderful shots, Hitesh. Oh, and that's a wonderful delivery. Trying to cut that. Misses that completely. But 8 already of the over. That's a good start to the innings by both these players, especially Hitesh. In the air. He's missed that. And just a single. That's a good shot, but straight to the fielder again. Raviraj Shetty. He's a brilliant all-round player. Doesn't allow the single to happen. This is the third over. 15 for no loss after 2. Good start by Ashish again. Wonderful shot. And that's a boundary. He's played it really well. Hitesh is on fire. Picked it up brilliantly. Just have a look at that. In the slot, and what a shot. Wow. This guy is on fire, Hitesh Mehta.
That's a wonderful delivery. Just have a look at that. Almost getting the off stump there. Was trying to hit the big one. Missed that completely. Hitesh Mehta, but he's played so well. Straight to the fielder again. A powerful shot on the up. This time trying to take the quick single, but sends him back. The right decision. And a quick single this time. Very well run by Hitesh and Manish. Oh, he's probably got hurt there. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. 3 overs have been bowled, 20 without loss. Raviraj Shetty coming into the attack, and the first delivery has been dispatched to the boundary. That's a wonderful shot. Brilliantly played by the batsman. Just have a look at that. That's a 4 on the first delivery. Played it well towards the fine leg, pulled it nicely. That was a hook shot actually. We'll show you the replay once again. Oh, absolutely, that was hooked. Wonderful hook shot. The youngsters watching can learn how to play the hook shot.
Raviraj coming into. Oh, that's a wonderful shot. And that's a boundary. What a shot that is. 2 in 2. Hitesh Mehta is on fire. Just have a look at that shot once again. Brilliant shot. Cut towards the third man. One bounce into the fence. Oh, and that's a wide down the leg side. So 9 of the over already. Oh, and this time missing the leg stump completely, trying to get him run out, but oh, and he's missed that. Just a single. He backed up quite a long way. Just a single and 29 for no loss now. Manish Doshi on strike. Hitesh Mehta has been absolutely brilliant. 24 of just 18 deliveries. Raviraj Shetty has been expensive. This is just his first over. 3 deliveries and 10 runs given by him already. Oh, he almost got him there. The edge. Very close to the edge. Missed by a whisker there. A good comeback by the bowler. Oh, and that's a wonderful shot. Brilliantly played. Should be a boundary. That is sheer timing and probably the shot of the evening. Just have a look at that. Wow. Just placed that so well in the perfect gap there. No chance for the fielder at sweeper cover. That was placed absolutely brilliantly through the point for a boundary. Another boundary. He's cleaned him up. Wow, what a start to his spell. A lot of runs given and then great comeback by Raviraj Shetty. And the first wicket down. A quick delivery and a full delivery. Oh, and missed that completely. Probably some late swing as well. Just have a look at that. I'll show you the replay in the slow-mo this time. Did it swing late? Need to see that. Oh, absolutely brilliant bowling, but probably he did not pick the line right. The batsman Manish Doshi will have to go back to the pavilion. And 34 for 1 after 4 overs. It was an expensive over. 14 of that, but gets the opener out of the equation. Raviraj. We take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
Ashish Siroy coming to bowl his next over. That's a good shot straight to the fielder. No run taken that time. Let's have a look at that. Another good delivery by Ashish. Dot delivery again. Oh, in the air, could be out. Oh, there is nobody out there. Will that be a run out? No, and they've missed that as well. So, a lot of drama on that delivery. Just have a look at that. I was trying to flick it, but probably it. Oh, and that was so close. I was trying to flick it, but it did rise a bit, probably, after pitching, and oh, and very close. Even the run out. That's a wonderful piece of bowling. We've got Manish Shah as the new batsman. Less than 100 runs required to win this match for Warrior Lions. Ashish Siroya. Bowling to Manish Shah. This is his first delivery. Oh, and he's almost got him there. The left-hander could not pick that up. Oh, was fending it, but was lucky to not get an edge there. Ashish has been really wonderful in this over. Just one of the over in the 4 deliveries that he's bowled. Bowling from round the wicket now. Another good delivery, and he's getting the ball into the left-hander, hitting the deck hard. That's a wonderful piece of bowling. That's a good over bowled by Ashish. 5th over has been bowled 35 for 1. I will take a quick break and be back soon. And we'll be back with the Hindi commentary. Stay tuned, viewers. रविराज आ गए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर और हिंदी कमेंट्री लेकर हम एक बार फिर से आ गए हैं। क्या बेहतरीन शॉट है, बड़ा छक्का, ये तारीफ करनी होगी यहां पर हितेश की। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, सीधे बल्ले से खेला हुआ जबरदस्त प्रहार। जी हां, आज का सबसे बेहतरीन शॉट ये, आज के पूरे मैच का। ऐसा छक्का देखने के लिए तो लोग टिकट लेकर भी आएंगे। इस तरह का शॉट था ये, वाह जबरदस्त शॉट, सीधे बल्ले से खेला और क्षेत्ररक्षक सिर्फ एक दर्शक की तरह देखते रहे। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं रविराज, वाइड गेंद। जी हां, लेग स्टंप की तरफ डाली हुई गेंद और वाइड। देखते हैं क्या संपर्क था बैट या पैड से। जी नहीं, ये वाइड ही है। थोड़ा सा उत्तेजित जरूर हुए
रविराज शेट्टी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग कहूंगा मैं इसे। अगली गेंद एक बार फिर से वाइड, यहां लेग स्टंप की दिशा में डालते हुए 2 वाइड। यहां पर रविराज, लाइन बदलनी होगी, दिशा बदलनी होगी। और एक बार फिर से आपको रिप्ले दिखाएंगे, क्या शॉट लगाया था पहली गेंद पर, सीधे बल्ले से कलात्मक शॉट। ही देखिए, माफ कीजिएगा, ये पहली गेंद नहीं है, वाइड गेंद थी ये। बढ़िया शॉट, पंच किया, एक ही रन इस बार। क्षेत्र रक्षक तैनात है स्वीपर कवर के क्षेत्र में। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये देखिए सिर्फ 89 रनों की आवश्यकता 89 गेंदों पर। और अब 88 गेंदों पर हितेश मेहता ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 32 पर आ गए हैं 23 गेंदों के बाद। बाहर डाली ये गेंद और अच्छा शॉट, लेकिन सीधे क्षेत्र रक्षक के पास। मिथिल की बेहतरीन फील्डिंग यहां पर, बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े हैं। रविराज शेट्टी काफी महंगे साबित हो रहे हैं, हालांकि विकेट लिया है उन्होंने। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं, बल्ले से भी आज इन्होंने योगदान दिया। आखिरी 11वें नंबर पर आए थे आखिरी क्रम में, और ये जबरदस्त गेंदबाजी। और यही इनकी सबसे अच्छी कला है, वापसी जो करते हैं। जी हां, जबरदस्त होती है हमेशा इनकी। हालांकि काफी महंगे साबित हुए हैं आज। बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं और अच्छा कर सकते हैं, सक्षम हैं। एक विकेट ले चुके हैं, दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी तो पलड़ा भारी है रिलायंस का। एक बार फिर से बाहर डाली हुई गेंद और ओवर की समाप्ति होने में 1 गेंद बची है सिर्फ। 3 डॉट गेंदें एक साथ। तारीफ करनी होगी यहाँ पर रविराज की। बढ़िया गेंदबाजी, और मनीष शाह ने इस बार अपना पहला रन लिया आसानी से खेलकर। और ओवर की समाप्ति यहां पर 6 ओवर के बाद स्कोर 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे, आपके साथ बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।
सिद्धार्थ आए हैं नए गेंदबाज, लेग स्पिनर हैं और अच्छी शुरुआत है यहां पर। और ये तेजी से लिया हुआ रन, 2 रन यहां पर ले लिए। डीप स्क्वायर की दिशा में अच्छा शॉट खेला और बढ़िया थ्रो भी था, लेकिन ये देखिए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। सिद्धार्थ बढ़िया लेग स्पिनर है, लेकिन पहली गेंद छोटी डाली और उसका भरपूर फायदा उठाया मनीष ने। तेजी से 1 रन लिया इस बार शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में खेलकर। बेहतरीन गेंदबाजी और यहां पर अपील कर रहे हैं कॉट बिहाइंड की। और विकेट कीपर को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत निराश है कि आउट नहीं दिया गया। हालांकि अंपायर तो जरा सा भी विचलित नहीं हुए, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा उनके हाव भाव पर। बड़ा शॉट, 6 रन। छोटी गेंद, खराब गेंद, उसके साथ उचित व्यवहार किया। बहुत ही खराब गेंद, ये देखिए हाफ ट्रैकर कहते हैं इसे क्रिकेट की भाषा में। और ऐसी गेंदों का ये हश्र होता भी है और बल्लेबाज ने भी ऐसा ही किया। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं हितेश मेहता। 38 पर आ गए हैं 25 गेंदों के बाद। अगली गेंद, बढ़िया शॉट, स्क्वायर की दिशा में खेला। 1 ही रन लेंगे, 2 ले सकते थे, हालांकि इस बार 1 ही का निर्णय लिया और 50 रन पूरे हुए इसी ओवर में उस छक्के के साथ। क्या बेहतरीन शॉट था, एक बार फिर से आपको रिप्ले दिखाएंगे। लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट 6 रन के लिए। कोई मौका नहीं किसी क्षेत्र रक्षक के लिए। और फिर से लाइव आ गए हम आपके समक्ष। इस ओवर की आखिरी गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और ये आउट। मनीष को यहां पर सिद्धार्थ ने पेविलियन की तरफ चलता किया। अच्छी गेंद थी, जी हां, इस बार शायद गुगली डालने की कोशिश की और बहुत ही बेहतरीन कोशिश। मनीष फंस गए यहां पर, पूरी तरीके से छका दिया, चकमा खा गए। देखिए ये गुगली ही है, जी हां। और आपको स्लो मोशन में दिखाएंगे कि कैसे इनका हाथ, इनके हाथ की तरफ ध्यान दीजिए। जी हाँ, गेंदबाज का हाथ कब गुगली डालेगा यार पता चल जाता है अगर आप देखें तो। ये देखिए पीछे से ला रहे हैं, जी हाँ, ये देखिए जबरदस्त गेंदबाजी और गेंद भी दूसरी दिशा में घूमी और यहां पर मनीष फंस गए पूरी तरीके से। आसान सा कैच दे बैठे और क्षेत्र रक्षक ने भी कोई चूक नहीं की, बहुत ही आसानी से इसको स्वीकार किया। और यहां पर दूसरा विकेट गिरता हुआ 55 के स्कोर पर 7 ओवरों के बाद हितेश मेहता वापस स्ट्राइक पर और कौशल त्रिवेदी आए हैं नए बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं।
और ये पहली गेंद पर विनोद मेहर ने हितेश मेहता को आउट किया। क्या गेंदबाजी है, वाह। विनोद मेहर की तारीफ करनी होगी। ये देखिए आते ही जबरदस्त, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। जी हां, ये विकेटों के सामने पग बाधा, यहां पर आउट दिए गए और सही निर्णय अंपायर के द्वारा। और देखते देखते 55 पर 3 हो गया है, जहां पर 55 पर 1 था सिर्फ 2 गेंदे पहले। पिछली 2 गेंदों पर 2 विकेट गिर चुके हैं और अब कप्तान हितेश भयानी आए हैं, खासा दारोमदार इनके ऊपर। रन गति बहुत अच्छी है, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी के चलते आउट किया विनोद मेहर ने इनका पहला विकेट। पिछली गेंद पर भी इन्होंने ही कैच लपका था, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में खड़े थे। गेंद का दूसरा ओवर और दूसरे ओवर की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन एक विकेट के साथ। अच्छी गेंदबाजी हितेश, थोड़ा सा चूके यहां पर, लेकिन कोई नुकसान नहीं। ये बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। बेहतरीन शॉट, और इसी की हम बात कर रहे थे। पहली गेंद तो आसानी से खेल ली, लेकिन इस बार बॉटम हैंड का पूरा प्रहार, जबरदस्त शॉट 4 रन के लिए एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में। देखिए बाहर की गेंद और क्या मारते हैं, वाह। लॉन्ग ऑफ पर क्षेत्र रक्षक था, उसके बावजूद सीमा रेखा को आसानी से पार करके चली गई ये गेंद और खाता खोला है बहुत ही जबरदस्त अंदाज में यहां पर। एक बार और जबरदस्त शॉट, लेकिन एक ही रन। बढ़िया कट शॉट था, बहुत जबरदस्त क्षेत्र रक्षण शॉट थर्ड मैन पर। एक ही रन दिया इस बार मिथिल का, जबरदस्त क्षेत्र रक्षण। आसानी से एक रन लिया और लॉन्ग ऑन से भागते हुआ क्षेत्र रक्षक, एक ही दिया। अच्छी गेंदबाजी और ओवर की समाप्ति। यहां पर एक बहुत बढ़िया ओवर, 6 रन गए इस ओवर में और एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट मिला हितेश मेहता का। क्या बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जबरदस्त विकेट मिलता हुआ विनोद मेहर को। LBW, लेग बिफोर विकेट, पगबाधा आउट किया उन्हें। सिद्धार्थ आ रहे हैं अपना दूसरा ओवर लेकर। पहले ओवर में ही विकेट लिया था इन्होंने। मनीषा को पेविलियन भेजकर इनका अगला ओवर। इकसठ रन बन गए, 71 रन चाहिए सिर्फ इस मैच को जीतने के लिए 11 ओवर में, 12 ओवर में। तो रन रेट तो यहाँ पर कोई मुश्किल की बात नहीं है। बढ़िया शॉट कौशल का, ड्राइव किया उसे, स्वीपर कवर के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा
हितेश बयानी ताबड़तोड़ बल्लेबाज, अगर थोड़ी देर भी और खड़े रह गए क्रीज पर, समझ लीजिए अगले 5 ओवर तक अगर ये खड़े रह गए तो ये मैच एक तरफा हो सकता है। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी और बहुत ही उचित खिलाड़ी इस दल को का नेतृत्व करने के लिए, बढ़िया कप्तान। और ये अच्छी गेंदबाजी सिद्धार्थ के द्वारा, सम्मान देते हुए उसे खेला भी बहुत ही अच्छे तरीके से, सीधे बल्ले से। क्या गेंदबाजी है, चूक गए यहां पर, और ये 4 भी हो गए। यहां चौका मिल गया, पूरी तरीके से चूक गए थे। और ये गुगली थी, जी हां गुगली के धनी हैं ये, जबरदस्त, क्या कलाकार हैं ये, तारीफ करनी होगी। बच गए यहां पर हितेश बयानी गुगली से, बहुत बेहतरीन गुगली। बढ़िया शॉट, एक ही रन, आशीष सिरोया स्वीपर कवर पर। और ये एक और जबरदस्त गेंद, कैसे बच गई ये, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं सिद्धार्थ यहां पर। जी हां, बहुत ही दुर्भाग्यशाली, अगर यहां पर भी विकेट नहीं मिला। और ये बचे, ओ हो, इतने करीब से, ये तो पिछली जो गुगली थी उससे भी बहुत करीबी मामला था। क्या गेंदबाजी डाल रहे हैं, और दोनों बल्लेबाजों को हवा भी नहीं लग रही जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि सीधे बल्ले से ही खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। उसके बावजूद गुगली का स्तर इतना उच्चतम कि रन बनाना बहुत मुश्किल। और ये बड़ा शॉट, बल्लेबाजी का भी स्तर बहुत उच्चतम है, 6 रन। तेज भयानी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि अगर ये थोड़ी देर और टिक गए, और ये इनकी तारीफ करनी होगी एक खिलाड़ी के तौर पर भी, गेंदबाज का दिमाग मस्तिष्क पढ़ लिया था इन्होंने। उन्हें पता था कि गुगली डाल चुके हैं पिछली गेंद पर, और इस बार हो सकता है गेंदबाज को लग रहा हो कि बल्लेबाज गुगली की अपेक्षा करे, इसलिए तैयार थे लेग स्पिन के लिए। और 6 रन के लिए बेहतरीन शॉट लगाया, और 9 ओवर के बाद स्कोर है 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विनोद मेहर आए हैं अगला ओवर डालने। बेहतरीन शॉट, 4 रन पहली गेंद पर, जबरदस्त प्रहार, पॉइंट के क्षेत्र में 4 रन आसानी से ले लिए। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन अंदरूनी किनारा इस बार, और फाइनल की दिशा में 2 रन मिल जाएंगे खेलकर। क्या सीधे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, लेकिन अंदर का किनारा लगा बल्ले का।
जबरदस्त गेंदबाजी, और क्या ये आउट हो गए? जी हाँ, ये क्लीन बोल्ड हो गए। स्लो मोशन में देखते हैं। जी हाँ, विकेट को छूते हुए गई और गिल्ली गिर गई यहां पर। 80 पर 4 हो गया स्कोर, और ड्रिंक्स ब्रेक का निर्देश यहां पर अंपायरों का। और एक विराम के बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नए बल्लेबाज प्रणय जैन स्ट्राइक पर। पहली गेंद खेली पॉइंट की दिशा में, एक भी रन नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी, एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर रखी है गेंद। जबरदस्त शॉट, लेकिन एक भी रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी और एक बार फिर से बेहतरीन ओवर की समाप्ति। इनके 3 ओवर हो चुके हैं। विनोद मेहर ने 2 विकेट लिए हैं और 80 पर 4 10 ओवर के बाद। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ और अंग्रेजी कमेंट्री लेकर आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
And we are back live with the English commentary. Siddharth coming to bowl his third over. On strike is Hitesh Bhayani. Oh, and what a delivery! Wow! He has been brilliant. But they've given a lot of runs in the first 10 overs. 80 already on the board. Just 52 to win now in the last 10 overs. And Hitesh Bhayani. So wonderful piece of bowling again, bowling in the right channel. Oh, and that's an edge, and there'll be a boundary. That is so unlucky for the bowler. Races towards the boundary. With that edge, he's bowled such wonderfully well in the last couple of overs, especially the previous one, but this time again doesn't have the slip and it races towards the third man boundary. Good try by Vinod Meher, but couldn't stop the boundary. It is 4 for 4 now, not many runs left. Oh, that's a wonderful piece of bowling again. He's missed that completely. Hitesh Bhayani completely bamboozled today on a lot of occasions. He's a very good batsman, but today he'll have to say that Siddharth has got the better of him so many times. He's been very lucky to still be there at the crease. It's a good shot, just a single. The long off does well. And that's the end of another good over. 11 overs have been bowled, 85 for 4. And he's got him this time. Absolutely stunning piece of bowling. He has been on fire. He's cleaned him up. Brilliant bowling, and Hitesh Bhayani was definitely uncomfortable. And what a wicket this time by Vinod Meher. This is his third. Comes round the wicket and bowls in the right areas. And he's got him. He was stunned there. And the fifth wicket down. So they're in slight bit of trouble now, the Warrior Lions. And the Mumbai Vikings trying to pull this match in their favour, and they've got the fifth wicket as well. Vinod Meher, this is his last over. Vinod Meher, if he could take another wicket in this over, it could be a really interesting match. Not many runs required to win, just 47. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
That's a good shot this time. Jimmy Shah, the new batsman, opens his account. The very first delivery he faces. Just have a look at that replay once again. Oh, and he was stunned. Such was the act by Vinod Meher. Cleaned him up completely. Hitesh Bhayani. Pranay Jain. In the air! And that's a good stop, but probably he's missed that and will be a boundary. That was a good effort, but in the end, turned out to be. Oh, and could have been a better one. That's a boundary. Third man region, and they cannot afford to give away such runs. They don't have much to defend now. 42 is what they need at the moment. Pranay Jain opens his account with a boundary, but that was uppish. They've done a wonderful job defending the 131 that they had scored. Mumbai Vikings 90 for 5. They brought the Warrior Lions to. Oh, and this time he's just missed that. Probably the bat saving him. Just have a look at that. Oh, and yes, that was bad. Was that going down the leg side? Two deliveries still to go. He needs to take a wicket. This is the last over. He's been so good. Vinod Meher. That's a good shot. Played with a straight bat and a quick single taken. Ashish fumbles that and a single taken quickly. Jimmy Shah coming into bat again on strike. He's played just one delivery. That's a good shot. Oh, and this should be another boundary. Wonderfully played by Jimish. He's such a wonderful act. This guy has won so many matches for his team. Just have a look at that. What a shot that is. Oh, and could have been a better effort there, but ending the spell. Vinod Meher with the boundary. Jimish there. 12 overs have been bowled. 95 for 5. What a spell by Vinod Meher. Although 10 of that over, but a wicket again and 3 wickets he's taken. Siddharth coming to bowl his next over. That's a full toss. He's played it well. Just a single. The deep square does well. Just 36 required to win now. Oh, and in the air. And will be a boundary. That's a full toss on the leg side. Not a good delivery at all. And Jimmy Shah is not a type of batsman who's going to miss these opportunities. And that's the 100 up as well. So Siddharth missing the line completely on that occasion. Just 32 required to win now.
This is just the 13th over. Oh, that's a good delivery. That's a good shot towards the square leg once again, just a single. That's a good delivery again. He's played it well. Oh, he's pulled that brilliantly. Just a single though. Fielder does well. And a good throw. So that's the end of Siddharth's spell as well. 7 of the over. The score is 102 for 5 after 13. Just 30 required to win in 7 overs now. Seems to be a walk in the park for the Warrior Lions. Unless and until something miraculous happens. Ashish Faujdar coming into bowl his first over. Starts off on a delivery that was pitched outside the leg stump, and that's what the umpire signaled. Just have a look at that. That was definitely outside the leg stump. He's a good all-rounder, this guy, Ashish Faujdar. Leading the team as well today. That's a good delivery outside the off stump. And dot to start after the wide. Oh, and this time he's got the edge. So the 6 wicket down. What are they doing? The Warrior Lions making this match interesting for no reason. Poor shot played by Pranay. And he'll have to go back to the pavilion. That was a very good catch by the wicket keeper. Ashish gets his first wicket just on his second delivery. And the score is 102 for 6. Last 4 wickets remaining. They need just 4 good deliveries to take this match in their favour. We'll take a quick break and be back soon. Mumbai Vikings still fighting out really hard here. Stay tuned, viewers. We'll be right back.
Santosh Palve is the new batsman. That's a wonderful shot. Could be a couple to start with. He's coming back for the second, but Jfsc says no, and that was the right call. That's a very good start. So 3 dot deliveries and a single and a wicket. Wonderful start by Ashish Faujdar to his spell. That's a wide. You're not afford to bowl that. And why is he so surprised with that decision? That's a clear wide. Way outside that off stump line. Oh, and that's a good delivery in the block hole. And he's missed that, the fielder. Easy single taken by the batsman. $105 for 6. And Santosh Palve and Jfsc both are wonderful batsmen, especially Jfsc, 11 of 6. He has a knack of finishing the games for his team. Santosh Palve is a wonderful batsman as well. Could hit big shots. Oh, and he almost got him there, Ashish. This is great bowling by Faujdar. Ends his first over. Just 3 runs on a wicket. The score is 105 for 6 after 14. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
And we've got Jimish on strike. Maitrik Thakkar has been handed over the ball to start his spell. This could be a very crucial over. If he takes a wicket or so, Jimmy will have to be really careful. It's a good shot, but just a single. Oh, and he's got him, it seems. No, that was missing the leg stump. That was signal leg byes, but what a delivery. Oh, wow. Absolutely brilliant bowling by Maitrik. Just have a look at that. That did skid a lot, and he appealed as well. He knew that this would miss the leg stump for sure, and probably slightly high as well. But what a delivery. They take a single. Jimish back on strike. Maitrik. That's a good delivery straight to the fielder this time. Jugal Sobhani doing really well at cover point. And they've got a backward point as well as a cover point. This is a good field placing by the captain Ashish Faujdar, and they're trying to put in the pressure. Maitrik coming to bowl his next delivery. That's a good shot, but straight to the fielder at backward point. Nikhil doing really well there. Another dot delivery. 4 deliveries and just 2 in this over. They still need 25 to win. 32 deliveries still remaining. A good delivery straight to the fielder again. It's a good shot. Straight to the fielder again. This is really good bowling. 4 dot deliveries to end the over. Just 2 of the over. And after 15 overs, the score is 107 for 6. 25 required to win and 30 deliveries. We'll take a quick break and be back soon. And we will be back again with the Hindi commentary for the rest of this innings. Stay tuned, viewers. सोलहवें ओवर की शुरुआत यहां पर आशीष फौजदार आ रहे हैं अपना अगला ओवर लेकर. बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त शुरुआत और संतोष पलवे स्ट्राइक पर. 29 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता. ये मैच अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है. मुंबई वाइकिंग्स की तारीफ करनी होगी, छोड़ नहीं रहे हैं इस मैच को. 4 ही विकेट बचे हैं वॉरियर लायंस के और सिर्फ 4 अच्छी गेंदें चाहिए होती हैं 4 विकेट लेने के लिए. तो यहां पर पलड़ा अभी भी 50-50 है दोनों दलों के पक्ष में.
अगली गेंद डालने आ रहे हैं आशीष। बेहतरीन गेंदबाजी और जबरदस्त क्षेत्र रक्षण कप्तान के द्वारा। बहुत ही जबरदस्त ये गेंदबाजी आशीष के द्वारा और बहुत सही समय पर खुद को आक्रमण में लाए हैं। और ये अंदरूनी किनारा, यहां पर भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, 4 रन मिलेंगे। लेकिन शॉट तो ऐसा नहीं था कि चौके की तलाश में हो। ये देखिए, प्रयास था बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन अंदरूनी किनारा लगा और फाइनल की दिशा में गेंद गई 4 के लिए। सिर्फ 21 रनों की आवश्यकता है यहां पर। आगे बढ़कर बढ़िया शॉट और एक ही रन। जफर शेट्टी का अच्छा क्षेत्र रक्षण। सिर्फ 20 रनों की आवश्यकता अब जिम स्ट्राइक पर। अच्छा शॉट, बैकफुट पर पंच किया 1 रन के लिए कवर्स के क्षेत्र में, एक्स्ट्रा कवर पर। इसे रोका क्षेत्र रक्षक ने। सिर्फ 19 रनों की आवश्यकता अब इस मैच को जीतने के लिए। बेहतरीन शॉट, खराब क्षेत्र रक्षण, 4 रन। ये रोकना चाहिए था यहां पर, लेकिन लचर क्षेत्र रक्षण, बहुत ही करारा प्रहार था। और ये देखिए, गेंद के सामने नहीं आए और गेंद थोड़ी सी अंत में उछली भी, लेकिन ये रोक तो सकते ही थे। ओवर की समाप्ति यहां पर 16 ओवर के बाद 117 रन। सिर्फ 15 रनों की आवश्यकता, 10 रन बने इस ओवर में। मैत्री ठक्कर दूसरा ओवर डालने के लिए आते हुए। 4 ओवर में 15 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और ये अच्छा शॉट, यहां पर 1 ही रन मिलेगा। डीप पॉइंट पर क्षेत्र रक्षक है। सिर्फ 14 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 1 रन लिया। तेरह रनों की आवश्यकता। ये मैच अब एक तरफा हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। कुछ बहुत ही करामाती या चमत्कारिक होता है तो
शायद इस मैच का रुख पलटे, लेकिन इस समय तो एक ही दिशा में जा रहा है मैच, और वो है वॉरियर लायंस के पक्ष में। मैत्री ठक्कर की अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इन्होंने कराई है आज। और ये पुल करने का प्रयास, हालांकि एक ही रन मिलेगा। सिर्फ 12 रनों की आवश्यकता अब। बढ़िया शॉट इस बार, एक ही रन, जी नहीं एक भी नहीं, डॉट गेंद। अच्छा क्षेत्र रक्षण यहां पर। जबरदस्त गेंदबाजी और एक और ओवर की समाप्ति यहां पर। बहुत ही अच्छा ओवर, 3 रन सिर्फ दिए, और 3 ओवरों में अभी भी 12 रनों की आवश्यकता। सो मैच अभी भी मुंबई वाइकिंग्स छोड़ नहीं रहे हैं। तारीफ करनी होगी इस तरह के साहस की और अंत तक बने रहने की जो एक इच्छा शक्ति है, जबरदस्त है। बहुत ही उच्च स्तरीय प्रदर्शन मुंबई वाइकिंग्स के गेंदबाजों का। हालांकि ज्यादा कुछ बचा नहीं है मैच में, 12 ही रन चाहिए, लेकिन क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल है, हमें पता है ये। कुछ नहीं कह सकते आप, एक गेंदबाज आए और एक हैट्रिक ले ले और यहां पर मैच सर के बल पलट जाए। लेकिन जिमिश जैसा बल्लेबाज सामने है तो ये भी बड़ा मुश्किल है। मैच छोड़ते नहीं है, ये इनकी खासियत है। इस सीजन में बहुत बार रविराज शेट्टी आए अपना अगला ओवर डालने, और ये अंदरूनी किनारा, एक भी रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी। सत्रह गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता। और अंत तक ये मैच ले जाने का प्रयास कर रहे हैं मुंबई वाइकिंग्स। अगली गेंद, बढ़िया शॉट, फ्लिक किया, 2 रन मिलेंगे आसानी से यहां पर। जी हां, जिमिश आ भी गए। बेहतरीन बल्लेबाजी है। आगे की गेंद पैड्स पर डाली और उसे फ्लिक किया स्क्वायर लेग की दिशा में 2 रन के लिए। तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की यहां पर। जिमिश वैसे भी जबरदस्त बल्लेबाज हैं, ये हम सबको ज्ञात है पहले से ही, और मैच नहीं छोड़ते हैं वो, ये इनकी खासियत है। रविराज को ऑफ स्टंप के बाहर ही रखना होगा इस गेंद को, अगर वो चाहते हैं कि इस मैच में जान बनी रहे। सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता। बेहतरीन गेंदबाजी, और ये 4 रन, बाहरी किनारा, और ये विकेट कीपर चूक गए यहां पर। जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर ही रखना था ये गेंद और वही किया। ये देखिए
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, और ये कैच हो जाता अगर तो शायद टीएसएल का सबसे जबरदस्त कैचेस में से एक होता। अभी तक के कैचों में ये ऊपर के 2-3 कैच में जरूर आ जाता। क्या कैच होता है ये, लेकिन चौका मिल गया यहां पर। 6 रनों की आवश्यकता सिर्फ। तो 26 पर 6, बढ़िया शॉट, कवर पॉइंट के क्षेत्र में खेला। 1 रन के लिए स्वीपर की दिशा में गेंद जाती हुई। 5 रनों की आवश्यकता सिर्फ। इस ओवर में भी 2 गेंदें बची हैं। संतोष पलवे बड़े शॉट खेलने में माहिर है, लेकिन आज इनको बांध के रखा है गेंदबाजों ने। ग्यारह रन पर 11 गेंदें इन्होंने ली हैं 11 रनों के लिए। स्ट्राइक रेट अभी भी 100 का है, लेकिन उससे कहीं सक्षम बल्लेबाज हैं। और ये बड़ा शॉट, और ये 4 रन। बेहतरीन प्रहार। ये देखिए, जी हां, इसी तरह के शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। और जबरदस्त प्रहार 4 रन के लिए, और 1 रन चाहिए अब सिर्फ। स्कोर बराबर हो चुके हैं दोनों दलों के। और एक गेंद भी बची है इस ओवर में, तो 18वें ओवर में मैच खत्म हो सकता है। रविराज शेट्टी खासे महंगे साबित हुए आज, हालांकि दुर्भाग्यशाली भी रहे थोड़े। और यहां पर बढ़िया शॉट, मैच की समाप्ति। जी हां, 4 विकेट इस मैच को जीत लिया है वॉरियर लायंस ने। और एक अच्छे प्रदर्शन के बावजूद मुंबई वाइकिंग्स को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। और हम सभी दर्शकों का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, सारे श्रोताओं का भी, जिन्होंने हमारे साथ इस प्रतियोगिता में हमारा इतना साथ दिया है। और आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए आप सबसे आज्ञा लेते हैं, विदा लेते हैं। आपका कमेंटेटर शालीन गुप्ता एक बार फिर से धन्यवाद कहते हुए शुभ रात्रि, और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।